I hope. Hmm. So it automate has a built-in element of uncertainty. Maybe is that a reason that there is we cannot use the subjunctive in it because the verb itself has a uncertainty element of uncertainty in it. Maybe the other verbs which don't use subjunctive will also have this built-in element of uncertainty on basis of which we can decide that maybe this verb will not use subjunctive because it have an element of uncertainty built in it. नहीं नहीं Is it ऐसा a, नहीं है जो आप बोल रहे हो. is it a maybe if it's a pattern we So can when you say use je this. pense que and je crois que, yes, we do not use the subjunctive with these two. Now, there's now no such this thing that I mean, pense que तो uncertainty ही है ना, मतलब I think that. Yes. But basically, this pense is something I believe that, something which you think deeply, matlab that is why it is not subjunctive. But when I say je doute que, I I doubt doubt that, it it is also means subjunctive. it is subjunctive. Yeah, je doute que plus subjunctive. Okay, so this So theoretically here works. is a doubt, uncertainty. But when you say I believe that, so there is no, so it is like, croire and penser are like synonyms. So I pense, je pense que is also you're expressing your opinion. So when you are expressing your opinion, je pense que, je crois que, then it is not subjunctive. So croire and penser more or less mean the same. I think that, I believe that. Okay. So there is no, but penser and croire in the negation and the this thing, interrogative form. यहाँ पे लिखा है. Here we use subjunctive. You see, here we use subjunctive. Actually, anyway, we will start from we will read this, what is subjunctive. Okay, who will read these two lines? Okay, the first okay, le subjonctif Hmm. exprime un désir, Hmm. un souhait, une volonté, un doute, une Hmm. incertitude, un Hmm. conseil ou Hmm. une suppos- supposition. Hmm. Il s'agit généralement d'une action non ré- réalas- réalisée, réalisée au moment Réaliser. ré- réalisée au moment où l'on हाँ, parle. वही. So basically, the subjunctive, it expresses a desire. ठीक है? When we are expressing a desire, okay, un souhait, again a desire, a wish. ठीक है? Une volonté. Volonté is also a wish. ठीक है? A desire. Un doute, when we are expressing a doubt. Une incertitude, when we are expressing uncertainty. Un conseil, when you are giving an advice to somebody. Une supposition or supposition, when again you're supposing things, okay, not sure. Il Assuming. s'agit généralement d'une action non réalisée au moment où l'on parle. So we are saying that it is subjunctive is an action non réalisée, मतलब unaccomplished. अभी तक it hasn't been accomplished at the moment, at the time of speaking, है ना, when we are speaking. So for example, when I say je doute que cette personne viendrait, I doubt that if this person will come. तो अभी, till now the action is not completed, मतलब that person has might have come later, we don't know, but at this certain point in time I am doubting whether he will come or not, so this will be subjunctive. Je doute que cette personne vienne, pardon. Now this is actually subjunctive présent. We also have subjunctive passé, past. That is a B2 thing, but we don't really use in our exam.
Subjunctive passive we don't use, but subjunctive present we have to use. And because without subjunctive present, it I is mean, difficult to have we, NCLC 7. we use subjunctive in the writing task. Both writing and speaking. Okay. So, le subjonctif s'utilise après les verbes qui expriment la volonté, le souhait. So, the subjunctive is used after the verbs which express the desire, the wish. ठीक है? So, when you have some desire. For example, we use subjunctive with these expressions. Je souhaite que भी que आगे पता चलेगा है ना je souhaite je veux je désire j'exige je voudrais j'aimerais je demande que इन सब के साथ we use subjunctive. We will see the conjugation as well, and we use these things in our writing task. Okay, we use it. So je souhaite que मैं आज आपको एक दो राइटिंग टास्क दिखाऊंगी हाउ आई प्रिपेयर माय स्टूडेंट्स फॉर द राइटिंग स्टफ एज वेल. Je voudrais que we use in our spoken, aimerais que we use in our spoken dialogue, je veux que ये यूज करते हैं एटलीस्ट दीज फोर तो करते ही हैं. ठीक है. Par exemple, j'aimerais que tu viennes me voir plus souvent. I'd like that you come to see me often, more often. So ये जो VN आप देख रहे हैं, this verb conjugation, this is conjugated in subjunctive. Okay, j'aimerais que tu viennes me voir plus souvent. So I would like that you come to see me. So venir का conjugation is subjunctive, and it is always subjunctive is always done when there is क. अब ये नहीं है कि जहाँ पे जहाँ जहाँ भी क है वहां पे subjunctive लग जाएगा, ऐसा नहीं है. So we have certain verbs जैसे अभी हमने ये पढ़ा. Similarly, we have this verb, uh, les verbes qui expriment la nécessité, obligation. ठीक है. जहाँ पे necessity है या obligation है, there also we use subjunctive. Par exemple, il faut que, il faudrait que, il est nécessaire que, il est utile que, il est indispensable que. And we use one, two, or ये three. This we use in our exam. In my, at least I use them in my writing. My students use them in the writing. ठीक है. हमको ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं, तीन चार subjunctive expressions, पांच छह बस. Done. You should know how to use and where to use. Because subjunctive is such a vast topic. अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो it will never end. Sometimes you will question yourself कि यहाँ पे क्यों लगाया है, यहाँ पे तो जरूरत नहीं है. So every doubt, I mean, every question doesn't have an answer. Sometimes you have to memorize the expressions as it is. ठीक है. तो il faut que is very very important. We will use it. Il est nécessaire que we use it. Il est indispensable que we use it in our exam. ठीक है. It is necessary that इसका मतलब होता है सबका मोस्टली, है ना. Il faudrait qu'ils aillent voir le directeur. It is necessary that they go to see the director. ठीक है. आले का subjunctive है ये. Conjugations we will see. Again, so we use subjunctive with the verbs qui express the sentiments. Sentiments आपकी जो feelings होते हैं, ठीक है, inner feelings, sentiments. For example, je me réjouis que, je regrette que, je crains que, je m'étonne que. है ना. réjouir मतलब to happy, I'm to be happy. So I'm very much happy that. I regret that. Je crains que is I am afraid that. Je m'étonne que. I'm surprised that. Subjunctive.
Nous regrettons qu'il ne soit pas là. We regret that he's not there. ठीक है ये. So here it is all subjunctive. Okay. Similarly, certain tournures impersonnel, some impersonal this thing things. ये impersonal मतलब ये j के साथ नहीं होते, जैसे il faut que भी था. Il vaut mieux. It is worth that. Subjonctif. Il est possible que. Subjonctif. Il est difficile que. Subjonctif. ठीक है. Il est dommage que plus subjonctif. So, il vaut mieux que tu saches ce qu'il pense. It is worth that you know what he is thinking. Savoir. ठीक है. Then we have these two three verbs penser, croire, être sûr. As I told you, इनके साथ subjunctive नहीं होता है in the affirmative form. No subjunctive with these two. But when these two verbs are in the Negative. negative form and the interrogative form, negative and interrogative, then we use subjunctive. Now, basically, you have to practice lot of exercises of based on subjunctive. Again, I see our goal is not to do masters in French. You guys are not doing something research or PhD or something. When our goal is to clear TEF TCF Canada with NCLC 7, we need to know everything, that is for sure, but we do not really need to apply everything or use everything in our exam. So, for example, subjunctive phrasal, we must know what it is, where to use, when to use. But since there are so many expressions, हम सब कुछ याद नहीं कर सकते और हमें सब कुछ यूज करना भी नहीं है. Over usage of something is also gonna cost you negative. So when I tell my students, तो जैसे शुरुआत में हम पढ़ रहे होते हैं generally in one on one. So जब when I give writing, तो when I explain कुछ चीजें, ठीक है, तो I tell कि एक दो examples दिखा के and then when I give the homework, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ एक दो students they use a lot of subjunctive in their writing कि मैम ने बोला subjunctive करना है. ठीक है. तो हमें ओवरडू भी नहीं करना होता, जस्ट वन और टू इन आवर टास्क, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. कुछ लोग, देर आर स्टूडेंट्स हु कैन गेट एनसीएलसी 7 without using subjunctive. Let's say in might be in speaking, they can survive without using subjunctive, but in that case their speaking is so fluent. Only then you can survive. Okay. But when your speaking is not very fluent, और है ना फ्लूइडिटी वगैरह नहीं है, तो हमें subjunctive चाहिए. इट इज लाइक अ savior. ओके. मीन लाइक subjunctive हो गया, connectors हो गए, और expressions हो गए कुछ कुछ. सो ये सब सिर्फ दो तीन ही चाहिए होते हैं. ठीक है. ज्यादा नहीं चाहिए होते. तो हर टॉपिक को इतना डीप मतलब पढ़ ऐसे नहीं होता है. सो अगेन, मैं this comes with the focused this thing. ठीक है. तो डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल, दे कैन यूज इले पोसिबल को. तो अब वो मुझे आप लोग कुछ राइटिंग दिखाएंगे तो उसमें हम इनकॉर्पोरेट करेंगे कि आप ये कर सकते हो. इफ इट इज इजी फॉर यू टू यूज, यू यूज इट. ठीक है. इफ somebody इज नॉट एबल टू यूज एट ऑल दिस subjunctive और ये सब, तो देन आई विल गिव यू 3 4. बस हमें वही यूज करना होता है. यू जस्ट हैव टू स्टिक विद दैट. ठीक है. So it is easy to get NCLC 8, 9 in writing as well these days. I mean, my students are getting NCLC 8. 13 आ रहे हैं सबके. So, not कि हमने बहुत सारे यूज करे हैं, just 4 5, that's it. ठीक है ना. How it is conjugated, we will see the conjugation, la conjugaison. So, इसका conjugation हो गया.
se forme à partir du radical de la troisième personne plurielle du présent de l'indicatif auquel on ajoute les terminaisons. So these are the endings. ठीक है. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Now to which we add these endings to what? For example, finir is the verb on your left side. पहले हमने इसको प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन प्लोरल का प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट करना है ना. il finis. So what we do, we cancel ENT. तो हमारे पास क्या रह गया, FINIS. ठीक है. दिस इज द रेडिकल. टू दिस वी विल ऐड द एंडिंग्स जो कि हमारे पास यहाँ पे हैं, है ना. फिनीस, क ज फिनीस, एज आई टोल्ड यू इट इज ऑलवेज विथ क. क tu finis, qu'il finis, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, elle, qu'elle finisse. ठीक है. सो ऐसे ही ये दीज आर इरेग्युलर वर्ब्स. prendre. prendre का प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल. il prend होता है. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैंसल्ड ENT एंड हमारा जो रेडिकल है वो ये है PRENN. तो हमने इसमें एंडिंग्स लगा दिए. ठीक है. devoir का क्या होता है प्रेजेंट में, il doit, सॉरी, doivent. दिस इज द कॉन्जुगेशन, इरेग्युलर वर्ब है. सो इसका radical will be DOIV, right? So to this we add the endings. ठीक है, like this. So I'm just giving So you 2-3 minutes. हाँ, पूछिए. we need to practice only the endings of the subjunctives. हाँ, जैसे हर वर्ब की कॉन्जुगेशन आपने की है, ER IR RE वगैरह की, एम पारफे, इन सब Yeah. की. हाँ, सो एंडिंग्स याद करके प्लस हाउ वी यूज पुट इट. बट ये यूज करना इम्पोर्टेंट है. ठीक है. मैं आपको आज एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगी हाउ वी एक्चुअली डू द TCF प्रैक्टिस, द प्रेपरेशन. अगर आप लोग B1 का एक थरो से कर लो 1 महीना, फिर मतलब फोकस ट्रेनिंग लेके यू कैन डू इट. जस्ट जस्ट यू नीड दैट मोटिवेशन. थोड़ा करके एग्जाम बुक करके इसको खत्म करो, है ना. मतलब खत्म क्या करो, आई मीन फर्स्ट अटेम्प्ट यू शुड बी कॉन्फिडेंट. फिर बाय चांस हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट करेंगे. But by that time, you should know all the rules, concepts, how to write, etc. ठीक है. Just note these down in your notebook. And then irregular subjunctive, they are like etra, ava, shava, ulva, like पहले hyper. आप ये लिखो, अभी वो irregular भी I am telling. Yeah. So there are 4. Yeah. Okay. So the exceptions. These are few exceptions. So these are irregular verbs. So if you see with être, it is que je sois. Okay. They do not go with the regular conjugations. So this also you can write, click the photo, but write as well. So I'm giving you, yeah, you can write in the notebook. And we actually use these in our exam as well. हमको ये जरूरत पड़ती है, एत्र की यूज जरूरत पड़ती है. We get something like even avoir, fair, तो definitely. Vouloir, no, not really vouloir. Pouvoir for sure. And aller sometimes very less. But être, avoir, faire, pouvoir. ये तो definitely we use in our spoken French, in our dialogue. Okay. So write the conjugations.
Okay, now we can try this exercise. Question numéro 3. So try conjugating these, try doing this. Now in this, also observe that where are we using the subjunctive? So with expressions like je doute que, है ना? So je doute qu'il vienne. So venir, vienne हो जाएगा because it is conjugated like VIENNENT, and we remove ENT. This is the radical VIENN. And to this we add EES. So try at least the till 8th. One is already done. Try at least 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देखो वही. Okay, so second, wait, who will speak? Deuxième phrase. Jimhe consumer Hond with EH as its Hmm. ending, Hmm. Mopostable. Wait. Troisième. Nous regrettons que vous ne puissiez with the Where is he? PUISSIEZ Oui. parvenir avec nous. Hmm. Okay. Quatrième, mon père voudrait que je fasse Hmm. de longues études. Right. Que je fasse de longues études. Tu souhaiterais qu'il soit नहीं moi नहीं, avoir verb है ना. So avoir is the verb. So what will come? Third person singular. soit SYT, soit No, no. Soi is for être. AIT. Yeah, AIT. Oui. है ना, qu'il y ait moi de monde sur la plage. Swise for Atrimem, and then I think in this book it's written wrong. Like this book, the where you have seen the in this what is this book we're doing? There was a walk and actor in the irregular thing, and in Avoa it says Schwa, and in actor it says AIS, AIT. Where? It's not in shape of the book. Okay, might be wrong. Then être is this, avoir is this on the screen. Yes, here, remember, here it is right, but in that book, I think it's Acha. vice versa. Oh, okay. Okay, CZM. So, yeah. Je souhaite qu'il réussisse with the Reusis. ENT at the So, end. yeah. Leur, leur, leur examen, Yeah, leurs examens. Okay, septième. notre professeur de maths demande que euh, nous soyons Right, nous plus, soyons. plus authentiques. Hmm. Son père exige qu'il obtienne de bons Hmm. résultats, de bons résultats. Right, de bons résultats. Oui. Et comme ça, Elle- vous allez faire des autres phrases aussi. Okay, try doing the. Have you done these as well? Yes. Okay, what is the ninth one? Elle,
El Kha, to Sage Level, Louis, Hmm. Fuss with ENT ending, Very Il good. Fue, Yeah, because says alive is the subject, and Louis here is the pronoun. So the conjugation will be third person plural. Very good. Oui. Il est possible qu'elle refuse Hmm. Hmm. notre invitation au cinéma. Right. Same. Hmm. Next. Il faut qu'il Hmm. soit choisisse, choisisse Choisis. with ENT ending. Yeah. Choisis. Rapidement leur orientation pour l'année Huh. prochaine. Hmm. Il est temps que tu comprennes with, Hmm. with QMPRENNES Right. Comprenne. Que tu comprennes notre stratégie. notre Oui. stratégie. Stratégie. Yeah. Hmm. Il est rare Hmm. qu'il Hmm. envoie, intervient, intervient, Intervienne. intervienne pendant le Yeah. cours. I was doubt, Intervienne. I, I was a bit doubtful here because it said il est rare, which means it is rare. Like he is talking with very certainty. It feels No, like no. Il est rare que plus subjonctif. okay. Again, I told you you cannot just apply this कि यहाँ पे uncertainty है, doubt है. No. Sometimes you have many subjunctive expressions where you cannot apply this thing. मतलब आपको लगेगा कि why it is not this or why it is that. Like it doesn't have a like very consistent logic. It just basically Yeah, memorize yeah, it. yeah, exactly, yes. Okay. So intervienne. J'ai l'été, euh, il est tout à fait Tout à fait. normal. Il est tout à fait Il est tout à normal. fait normal qu'il fasse FASC he show. Yes, qu'il fasse. This means it is summer and it is all normal, all too normal. Non, c'est l'été, il est tout à fait normal qu'il fasse si chaud. So it is summers, it is totally. Tout à fait मतलब totally. Totally. Okay, too Tout à fait, it's normal. totally normal that it is this hot. Too hot. Hmm. J'aimerais qu'il Hmm. vende with ENT ending leur Hmm. maison de campagne. Yeah. Qu'il vende. Right. Okay. Euh, ils sont furieux Hmm. qu'il qu'il ait été Hmm. Hmm. refusé de Hmm. m'accompagner à la gare. So they are furious that they have refused me to accompany them to the Company. station. Yes. Refusé de m'accompagner à la gare. Oui. Oui, très bien. So you know the conjugations you are speaking also very well. I mean, your RRR is very good. Refuse, comprenne, inter, So, I mean, you are doing good. Just start practicing the writing and all that. So, whatever comes in the video, please do the writing. And il faut parler aussi en français. अब मैं parler क्या ही बोलूँ क्लास थोड़ा conversation नहीं होती है नहीं तो you speak in French है ना but yeah très bien oui c'est bien fait okay so with subjunctive in the book as well the B1 book which I have given you have that topic very much elaboratively और मैंने videos में भी बहुत अच्छे से it has been explained so please try to incorporate that in the writing and the speaking stuff
Next time, I think I'll be doing some speaking. I think last set of videos are left that I'll be sending today. 6 videos. So I'll send them today and yeah, complete those and then um again share some writings, okay, and do some speaking. Next time we will do some speaking in the class. Okay. Any questions or doubts? Uh, then so like in the book there were some examples like ille evidon, uh, il shakhala, which means like Hmm. it is evident means this Hmm. je suis sûr, which means Hmm. I am sure. So हाँ, no subjunctive. yeah, like these on basis of this I have to concur that it has a pattern that certainty and certainty, but it is also not very consistent. So like we should rely on this pattern that here there is certainty and here it's not, or we just have to Yeah, I put mean, it. you have to see that whether it is a uncertain situation or certain, yes. बट ऑनेस्टली फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रीडिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, लिसनिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, सिर्फ राइटिंग एंड स्पीकिंग है जो कि आपके हाथों में है यूज करना, राइट? नोबडी इज गिविंग यू फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज की आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में और क्या भरना है, वो चीज नहीं है ना यहाँ पे. सो इट इज ऑल टोटली इन योर हैंड्स. सो व्हेन इट इज इन आवर हैंड्स तो हम सिर्फ 5-6 सब्जॉन्टिव के एक्सप्रेशंस ही याद करते हैं, ठीक है, एंड दैट आई वी यूज इट स्पैरिंगली. तो वो प्रैक्टिस में आता है. सो बट ठीक है, यू रीड इट, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट. Subjunctive is totally in your hands. Everything is in your hands because you are doing the writing and you are doing the speaking. It's just that how and what to use that is important. Okay? And it is always required for subjunctive to have two subjects, right? Two subject, Yeah, yeah. two clauses, because Yeah. for with one subject and two clauses they use an Hmm. affinative, Affinitive, yeah. affinative. Yeah. Okay. ऐसे नहीं बोलूंगी ना je veux que je fasse cette activité. मैं simply बोल दूंगी je veux faire cette activité. Why do I have to use que je fasse? So this is what it is. ठीक है, so on se rencontre la semaine prochaine. Je vais partager d'autres vidéos. Il faut bien regarder et après on va commencer expression orale. OK? All right then, au revoir, à la semaine prochaine.